Okay, the unit number 5, the communicative approach. Again, it is the short chapter introduction. This unit is to introduce the basic purpose of the language teaching and the learning, and that is communication. The grammar translation method we have discussed in the unit 4. In our other methods, mostly emphasize of the acquisition, linguistic structure, and the grammatical structure and the vocabulary. However, communicative approach are the method of the teaching centralizes attention on the communication along with the learning of the structure and the vocabulary. The main purpose is that the students and the learners should be able to use performance the language while understanding the rules of the language using constant performance and the constant. What is the communicative approach? The communicative approach or the communicative language teaching CLT is a teaching approach that highlights the importance of the real communication of the learning to take place. In the communicative approach, real communication and instruction is not only the objective in the language teaching and the learning, but also the means through which it takes place. Actually, the communicative language teaching is a teaching approach जो कि हाइलाइट करती है, जो अक्कासी करती है इम्पोर्टेंस की, अहमियत की, आपकी रियल कम्युनिकेशन की फॉर लर्निंग टू टेक जो आप सीखते हैं। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच आपकी जो रियल मवासलाती निज़ाम होता है और जो आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आप लैंग्वेज सीखें या आप लर्निंग करेंगे, लेकिन इसमें आपसे क्या होता है कि तमाम की तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। दिस अप्रोच इंट्रोड्यूस की गई थी 1970 में और प्रोमिनेंट हो गई थी एज अल्टरनेटिव टू देन अबिसिस system oriented approach and methods such as audio-lingual method. That means instead of focusing on the acquisition of the grammar and vocabulary, the communicative approach aimed at developing the learner competence to communication in the target language with an enhanced focus on the real life situation. According to the Wilkins in communicative approach, the focus has been shifted from what language is to what language does. यानी अगर आप CLT पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज क्या है नहीं आप पढ़ेंगे। लैंग्वेज क्या है तो आप GTM पढ़ के आ चुके हैं, जिसके अंदर आप बेसिक चीज़ों को सीख के आ चुके हैं। ठीक है, बट लैंग्वेज इसका मतलब ये है कि बेसिक चीज़ रूल रेगुलेशन। लेकिन वो ये कहता है कि इसको आपने शिफ्ट कर दिया है कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर। जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं या उस लैंग्वेज को कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं तो वो लैंग्वेज कन्वर्ट होके वो व्हाट लैंग्वेज इज से कि लैंग्वेज क्या है तो वो कन्वर्ट होके क्या बन जाती है व्हाट लैंग्वेज डज कि लैंग्वेज कैसे परफॉर्म हम कर सकते हैं, लैंग्वेज क्या काम करती है, लैंग्वेज क्या करती है। ठीक है, लैंग्वेज में बोलना, लैंग्वेज में बात करना, तो ये आ जाता है सीएलटी मेथड। A communicative purpose are desire to communicate. Communicative purpose क्या है? Mostly content and not the form of the structure. Variety of the language and motivation this change has had a huge impact on the classroom material, course fees, teaching technique, and teacher role in the classroom, and still influence English language teaching and learning of this day. Communicative purpose आपका क्या है कि आपका ये होता है कि आपने कम्युनिकेशन करनी है और ज़रूर करनी है। कोई भी बेशक का कोई भी टॉपिक आपको मिल जाता है तो आप कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं।
सम की फीचर्स ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच। फिर आपको की फीचर्स की बात करते हैं कि कौन सी इसकी मेन और खसूसियात होती हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच की। अमंग सम की फीचर्स ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच, सबसे पहले द फर्स्ट वन इज दैट लेसन्स हैव कम्युनिकेटिव एम। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर आप लेसन्स पढ़ाएंगे ना, उसके अंदर वो कम्युनिकेशन के ही आप टॉपिक ऐड करेंगे। जैसे अगर मैं कम्युनिकेटिव अप्रोच के साथ कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है उसके अंदर मैं आपको रीडिंग नहीं दूंगी, उसके अंदर मैं आपको पैराग्राफ नहीं दूंगी, उसके अंदर मैं आपको कोई टास्क असाइन कर दूंगी, या मैं ये कहूँगी कि पुट योर कमेंट्स ऑन द आइडियाज़म। ठीक है, ये पुट योर कमेंट्स ऑन द 11th का, ये पुट योर कमेंट्स ऑन द 14th ऑफ अगस्त। ठीक है ना। तो जब आप इसके अंदर कम्युनिकेटिव मेरे एम्स होंगे तो मैं कम्युनिकेटिव लेसन्स भी इसके अंदर और चैप्टर और टॉपिक भी इसके अंदर कम्युनिकेशन के ही इस्तेमाल करूँगी। ठीक है। Communicating meaning is the main goal in CLT, and language is seen as a tool for the learners to reach this aim. कम्युनिकेटिव मीनिंग क्या है? आपका मेन आपका गोल होता है। मैंने आपको कल कहा था कि जो गोल होता है वो आप क्या करते हैं, कंट्री लेवल पर लेकर जा रहे होता है। आपका कंट्री से शॉर्ट लेवल पर गोल होता है आपका। ठीक है, जब आप कम्युनिकेटिव अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मेन गोल ये है कि जो हमने जो भी कोई चीज़ पढ़नी है करनी है, उसमें हमारा गोल है कि हमने कम्युनिकेशन के लिए इस चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करना है। एंड लैंग्वेज इसके अंदर आपके पास एक टूल होता है, आपके पास एक आला होता है लैंग्वेज। ठीक है, जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो हम जबान के थ्रू ही बात कर रहे होते हैं। आपके पास कम्युनिकेशन के लिए टूल क्या है? आपकी जबान है। ठीक है, आपकी लैंग्वेज है। फॉर द लर्नर्स टू रीच टीचिंग, फॉर दिस रीजन, इस वजह से द सिलेबस ऑफ द कोर्सेज दैट अडॉप्ट द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू द टीचिंग फेवर लेसन्स एम दैट विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एंड डेवलप देयर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रादर देयर ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। तो इसके लिए वो कहता है कि आप इस अप्रोच के लिए इस वजह से जो आपने सिलेबस कोर्स में ऐड करना है ना, वो आपने इस तरह के लेसन ऐड करने हैं जिसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा रीडिंग की तरफ ना आ जाए, ज़्यादा प्रैक्टिस वो क्या करें, विकैबलरी की तरफ करें, ज़्यादा वो स्पोकन की तरफ जो है वो करें, तभी आप कम्युनिकेटिव अप्रोच को इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज डिजायरेबल व्हेन अडॉप्टिंग द कम्युनिकेटिव अप्रोच बिकॉज इट सीम्स मोर रियलिस्टिक इन जेन्युइन कम्युनिकेशन। Skills are seldom implied in isolation, and an integrated skill approach simulates when happens in the real life. The source of the text in skills lesson is also important. In communicative approach, authentic texts are usually favored, as they might provide the learner with exposure to a more genuine use of the language. ठीक है? In order to help learners improve their communicative competence, it is important to provide a range of the practice activities. अगर आप चाहते हैं कि आपका लर्नर ज़्यादा इम्प्रूव करे अपनी कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंस को, तो आपको चाहिए कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं, आप उनको ऐसे टॉपिक दें जिसके ऊपर वो बोलें, जिसके ऊपर वो बात करें। Although the ultimate aim is genuine communication, जो आपका एक मकसद होना चाहिए वो आपका कौन सा है, कि आप जो है वहाँ पर कम्युनिकेशन करेंगे। देयर इज रूम फॉर एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेज दैट इंश्योर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस लैंग्वेज इन मोर कंट्रोल्ड मैनर। वहाँ पर कोई रूम, जैसे अक्सर हॉल होते हैं ना, हम फंक्शन को ये अटेंड करते हैं तो वहाँ पर हम हॉल के अंदर जाकर अपने फंक्शंस को अटेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, इसके लिए वो कह रहा है कि जहाँ पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, बोलना है, तो उसके लिए अगर आप क्लासरूम अगर आपका छोटा है तो आप क्या करें कि अपने स्टूडेंट्स को किसी ऐसे हॉल वगैरह के अंदर ले जाएं, या कोई जो आपका ऑर्गेनाइज्ड रूम है उसके अंदर ले जाएं, जहाँ पर आपके पास ऑडियो विजुअल एड्स भी मौजूद हों, जिसके पास आपके पास स्पीकर हो या माइक हो, जिससे आपके स्टूडेंट्स बोल सकें। उसको जो है वो कोई टॉपिक आप असाइन करें, वो उसके ऊपर बात करें। ठीक है ना, तो इस तरह से उनकी स्पीकिंग जो होती है वो इम्प्रूव होती चली जाती है। फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑन द एक्यूरेसी एज वेल, दीज शुड नॉट एवर बी द ओनली सोर्स ऑफ द लैंग्वेज प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट ओके, activity types
Activity types and the classroom tips. As the teacher is not the center of the instruction anymore, activities in the communicative approach usually favor students and the interaction and the maximize learners' opportunities to speak. The activities below can be used to provide the learners with the practice of the language, and the level of the score given might vary depending on the stage of the lesson. The lesson aim, the students, the level of the ability. एक्टिविटी टाइप और क्लासरूम टिप्स के बारे में वो बात करता है। वो कहता है कि आपकी एक्टिविटी टाइप्स एज अ टीचर आप जो है वो सेंटर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आप नहीं है एज अ टीचर। ठीक है, एक्टिविटीज वहाँ पर सेंटर ऑफ अटेंशन है, कम्युनिकेशन वहाँ पर सेंटर ऑफ अटेंशन है स्टूडेंट के लिए जब आप सीएलटी मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं है कि टीचर लेक्चर को डिलीवर करता जा रहा है और स्टूडेंट आपको सुनता जाए। नो, उसके लिए जो मेन चीज़ें हैं, उसके लिए जो मेन इंटरेक्शन की चीज़ है वो क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मौके उसे दिए जाए, लर्नर ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, बोले, एक्टिविटीज़ करे, स्पीकिंग करे। ठीक है, information gap activities. Information gap activities require the learners to talk to each other and find out missing information they need to perform a certain task. The information missing might include the word number information gap activities, यानी अक्सर ऐसे होता है जैसे fill in the blanks नहीं आपको दिए गए होते। वो कह रहा है कि आप सीएलटी मेथड में कम्युनिकेशन लर्निंग मेथड के अंदर आप कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट की लर्निंग, आप कम्युनिकेशन इनहेंस कैसे कर सकते हैं कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन दें उनको और उसमें कुछ वर्ड जो है वो आप मिसिंग कर दें और फिर अपने स्टूडेंट्स को बोलें कि इसको कंप्लीट करें। ठीक है, बोलें और इसको बोल के कंप्लीट करें। तो फिर वो क्या करेंगे, वो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। वो आपकी जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो कह रहा है कि इसके अंदर कौन-कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। आप इसके अंदर आप नंबर इंक्लूड कर सकते हैं। आप उसके अंदर इवन आप ड्राइंग को मिस कर सकते हैं, यानी आप आधी ड्राइंग करें और फिर आप आधी ड्राइंग ना करें। फिर अपने स्टूडेंट्स को बोलें कि ये ड्राइंग जो है वो किस जो है वो टॉपिक की है और वो आपको ये बताएँगे कि अच्छा मैम ये टॉपिक है और फिर आप ये बोलें कि अच्छा मिसिंग इसके अंदर क्या चीज़ है, तो फिर आपको वो बोल के दिखाएँगे कि मैम इसके अंदर ये चीज़ मिसिंग है। तो इस तरह से क्या होता है कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाती है, वो बोलते हैं टॉपिक के ऊपर। The main point is to get the students to talk and work collaboratively to share all the information they need. ठीक है?